Hello everyone, Avneet this side from the Cyber International Balinagar. So today we are having sir along with us. Sir, आपका गुड नेम क्या है? मेरा नाम दीपक है। तो दीपक जी आप कहाँ से आए हो? मैं सरिता विहार से। दीपक जी आप एक बार हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहोगे वो इंसिडेंट? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। ये एक्चुअली मुझे पहले यहीं आके इंस्टॉल कराना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे पालिका भवन में ये स्टीरियो मिल गया, तो मैंने सोचा वहीं से ही लगवा लेता हूँ, इतना दूर नहीं आना पड़ेगा मेरे को। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि फिटिंग इसका बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। मेरे जो ब्लूटूथ है और कॉल रिसीव और कॉल कट करने के जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल नहीं चले, और नीचे यूएसबी कनेक्ट भी नहीं हुआ, और इट सीम्स कि कुछ एक्स्ट्रा माइक आता है वो भी मेरे को नहीं मिला वहाँ से। और जो उन्होंने फिटिंग किया, पीछे जो एक्स्ट्रा कैमरा लगाया, वो जो एक छेद होता है वहाँ पे, उन्होंने कैमरा के लिए एक छेद बनाया, उस छेद को उन्होंने कवर नहीं किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बारिशों के टाइम पे पूरा मेरी गाड़ी में पानी भर गया उसकी वजह से। सो द फिटिंग वॉज वेरी बैड। तो ये मैंने वहाँ पे फेस किया, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे साहिबा में कॉल किया एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे आके मेरा वो सारा इश्यूज़ रिजॉल्व हुआ। और अवनीत भाई यहाँ पे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को समझाया कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द री इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो आई एम वेरी हैप्पी। And sir, in the installation of the product, was there any wire cutting that was required to be done? नो वायर कटिंग, कोई ऐसा वायर कटिंग नहीं था। प्रॉपर कपलर हमने लगाया आपकी कार के अंदर से? हाँ, प्रॉपर जो लगाए हैं बिल्कुल, मतलब कोई वायर कटिंग नहीं हुआ है, तो अच्छी तरह किया है इंस्टॉलेशन। Okay, thank you very much sir for your feedback. थैंक यू। This is the stereo that we have installed in the car. If we talk about the specifications of this stereo comes along with 2 plus 16 GB of RAM and storage, IPS panel and Gorilla Glass. IPS panel का ये benefit होता है कि if we watch from any angle, we will get a clear view. Like I am tilting the camera angle. As you can see, after tilting, the video is totally clear. Next thing is the Gorilla Glass. This stereo comes along with 5 dimension of Gorilla Glass, which makes the screen toughness more strong. You can see its touch response, it's quite fast. We also have provision of 12 band of equalizer, which is given in the stereo. It can be used to enhance our sound quality. Other than this, we also have zone option in it. Zone option can be used to check whether all the speakers are working or not, and we also have loud option in it. After enabling the loud option, our mids and bass increases automatically. This stereo is installed with proper frame in the car. As you can see, the fitting is totally accurate. There is no gap from any side in the car. Next thing is the steering control keys, which are also working perfectly with the stereo. This is the volume increase key, volume decrease key, mute key, mode key to switch between multiple applications. This is the track next, track previous key. Even these 3 keys also works properly with the stereo. Like this is the call accept and decline key. These works when the Bluetooth is connected with the device. If we talk about the processor of this stereo comes along with quad-core T3P1 processor, which is fastest. This processor also makes multitasking more faster as compared to other stereos. This stereo is also connected with the reverse camera in the car. Our reverse camera is working perfectly with the stereo. In the installation of this stereo in the car, there is no wire cutting that is required. Everything that is done is coupler to coupler. We also have option of split screen option in the stereo, which can be used to play multiple application at the same time. For enabling split screen option, first we have to open both the application that we want to use. Like first application is YouTube and second application is Google Map. When we open both the application, we can easily access the split screen mode in the stereo. This mode is very much beneficial as we can play maps at the same time
when we are watching the video. With the stereo we have also set the car logo, that is the Suzuki logo. When we turn on the car, our Suzuki logo will come instead of the Nippon logo. Like I have turned off the car. When the car is turned on, Suzuki logo is appearing on the screen. Thank you everyone for watching my video.